Hello my lovely traders, I hope you all are doing well. Now today was a very consolidated day, at least till 1:30 p.m, 1:15, 1:30 p.m, and then there was sudden move in Reliance and a few private banks, and that took Nifty back to its upward journey और वापस 15,600 के पास जाके निफ्टी खड़ा हुआ है. कल एक छोटा सा गैप अप भी अगर आता है 15,600 will be taken out and then we'll have to wait for price action कि कल क्या होता है, because 15,600 is actually a crucial resistance as of now. And in terms of bank nifty as well, 35,500 is a good resistance and अगर कल अच्छा गैप अप आता है तो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता हुआ दिख सकता है. आज पूरे दिन कंसोलिडेट करते रहा निफ्टी 50 इंडेक्स, बट at the end Reliance did manage to do well. We look at the Reliance on the charts and I'll tell you कितना powerful move आया last में. Plus if you look at Adani Enterprises has been flying. Yesterday it was up by I think as 8 or 9%, and yeah 8%, and today it is up by 9.21%. So Adani is doing good. Few other stocks from Adani have also done well. Adani Green and Adani Trans both have done well. Along with Adani Enterprises. And if we talk about today's complete award goes to Reliance, because Reliance is the one who saved Nifty, and Reliance has announced its annual general meeting on 24th of June. Yes, and there is expectation कि Jio और Google का जो क्लब होके स्मार्टफोन आने वाला है, affordable smartphone plus Jio laptop is being talked about, and 5G spectrum for Jio is being talked about. So all these things might come up on 24th of June, जिस कारण से आपको Reliance के अंदर एक अच्छा मूवमेंट अभी देखने को मिल सकता है, at least till 24th of June, I think so. I can say so. And other than that, if you look at Muthoot Finance was it was on our TMT watch list and it did gain 2% for the day, although it did not hit our trigger price, the entry price, but it did gain 2% for the day. And SBI is again at all-time high. We discussed about SBI in yesterday's analysis video, and I said that PSU bank index looks strong, especially because of SBI, and it is again 1% up for the day. So again, SBI definitely contributed sufficiently well to the bank nifty index, and both Nifty and Bank Nifty consolidated very hugely till 1:30 p.m, but then we saw a good move and 15,500 आज टेस्ट हुआ था. 15,600 के बहुत करीब जाए खड़ा है निफ्टी. अगर आप एक चीज देखेंगे तो अच्छी नोटिस करने वाली बात यह है that the mid cap sector has actually outperformed Nifty today. The mid cap sector is up by 1.4%. So mid cap sector में अगर power है तो इसका ये मतलब है that there is a strength in bulls as of now, and bulls are trying to defend the 15,500 level, and we might actually see 15,600 completely taken out tomorrow. Tomorrow is the day of expiry, and we have to trade cautiously on the day of expiry because the option premium decay will be very fast. So as an option buyer, you have to trade with full caution. So just in case if you have not subscribed to this channel yet, I would want you to subscribe to Roaring Bulls right now and hit the bell notification icon as well, because आपके लिए रोज जो लर्निंग वीडियोस आते हैं, रोज जो लेवल एनालिसिस वीडियोस आते हैं, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन के अंदर ट्रेड लेने के लिए. मैं आपको चार्ट्स पे भी चल के दिखाऊंगा किस तरीके से हमने बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बुक किया. माइंड ट्री हमारे सिलेक्टेड स्टॉक्स में था टीएमटी वॉच लिस्ट के ऊपर, जो मैंने टीएमटी क्लब मेंबर्स के साथ डिस्कॉर्ड सर्वर पे शेयर किया था, एंड इट डिड हिट आवर targets very well. Both targets were hit in Mindtree. So मैं ये सारी चीजें आपको अभी चार्ट से बताऊंगा. Stay tuned till the very end of the video because you are going to learn a lot from this video. Okay, so if you are a very serious learner, then only you can actually earn from the markets, because market is not an easy game, my friend. जिसने आपको ये बोला है कि मार्केट में पैसा बनाना आसान है, I am telling you, don't believe such gurus who tell you that it is easy to make money into the markets. Only believe those people who actually tell you that it is tough to make money in the markets, but it is not impossible. You can make money, but you have to be disciplined enough to make money. Because what is the stock market? If I'll tell you in simple words, मैंने अपनी masterclass के अंदर भी ये कहा था, stock market is nothing but a systematic transfer of money from an indisciplined trader to a disciplined trader. Now if you believe me, if you understand this, just go into the comments below and write down the same line. What is the stock market? The stock market is nothing but systematic transfer of money from an indisciplined trader to a disciplined trader. Now the question is, are you an indisciplined trader or a disciplined one? So we at TMT Club actually help our all members to become more disciplined. I'll tell you on the
screen right now. How do we actually do that? So let's just move ahead with the video. This is Utkarsh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show. ओके सो दिस इज हाउ आर डिस्कॉर्ड सर्वर लुक्स लाइक. मैं इसके ऊपर ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना चुका हूं, उसको जरूर देख लें. नाउ इफ यू लुक टुडे वी हैड selected watch list of stocks. We had SBI in our watch list, we had PEL, and then let's see what else did we have. We did have Muthoot Finance, we had Petronet, and then we had Mindtree. So Mindtree was very well hit with the targets. This is one thing to see over here. And then what else do we have today? Let me show you the P&L space for the members, and it was a pretty good day. If you can see, members have booked pretty good profits. I think most of the members have booked decent profits for the day, and it is pretty good to see that this whole thing is actually making members accountable. कैसे बना रहा है? जब members अपने profits को share करते हैं तो उससे एक बहुत deep impact आता है members के ऊपर कि उनके अंदर एक accountability develop होती है, that they have to make sure that they don't overtrade, and if they do overtrade, then other members actually help those members to understand that how not to overtrade. So for example, there's one member who needed help with overtrading, and then two more members came up to actually help him to make sure that he actually starts to be in discipline. So that is great to see. It is such a great community that is being built up here, and this is amazing to see. If you can just see how wonderfully these two members have actually helped our dear Arvind over here, and he has done pretty well. So I am actually showing you this because this is a community of traders who are there for each other, who are there to help each other, and I would welcome all of you actually on this community so that you can enjoy all the benefits of this amazing community, the TMT club, and plus you can attend the course as well. So let's look at Mindtree. Mindtree में हमारा जो entry trigger था वो था 2404 पर. हमें शॉर्ट करना था 2404 पर. जैसे ही हमारा प्राइस आया उसके बाद हमें शॉर्ट करना था. हमने शॉर्ट किया. हमें कितना टारगेट अचीव हुआ? टारगेट 1 था 2374 और टारगेट 2 था 2340 approximately. So target 1 was also done and target 2 was also done. So that was such an amazing analysis by one of our mentors at Roaring Bulls, and it is actually amazing to see that all the Roaring Bulls community members, all the mentors are so hardworking that they are making sure that we are at Roaring Bulls are actually trying to make sure that the stock market space becomes organized. People come with full education and discipline into the stock market, so that actually you can know that it is possible to make money but with discipline. Let's look at Reliance. मैं Reliance की आपसे बात कर रहा था. अगर आप देखेंगे it was a pure day of consolidation. Central pivot range जो Reliance की थी, सिर्फ CPR के आसपास Reliance पूरे दिन consolidate करता रहा, और last movement में approximately around at 3 o'clock it shot up so much. From 2170 it shot up to 2210, a huge 40, approximately I think 40 point momentum, and it was a great momentum on the upside by Reliance. Let me actually see what kind of momentum did Reliance have in the last few moments. So yes, we can see it's a 42 point momentum just in last last half an hour, and that is wonderful. So it is one thing to note here. Now let's look at the indexes. Okay, देखिए साइड बाय साइड मैंने आपके लिए दोनों खोल रखे हैं. निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही आपके लिए ओपन है. साइड बाय साइड क्यों खोल रखे हैं? देखिए मैं आपको हर बार बोलता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू ट्रेड you open up both the indexes and make sure that you watch them carefully, because it is very important to actually look at both the indexes together when you are entering a trade. For example, अगर आपको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जा रहा है पर निफ्टी वीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ब्लाइंडली बहुत ज्यादा लार्ज कॉल पोजीशंस बना लें या लॉन्ग पोजीशन बना लें, बिकॉज in general Nifty shows the behavior of the market. So that is one example that how can you actually understand what to
do in the markets. Okay, so what we'll do is we'll just open up the bank nifty index as of now, right? Okay, so here is the nifty bank index. So इतनी सारी जो लाइनें आपको दिख रही है ना, ये लाइनें सारी काम की हैं, बेसिकली सभी हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स हैं. सो जस्ट इन केस अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो कंफर्टेबल होना शुरू हो जाइए, क्योंकि अगर आपको हिस्टोरिकल सपोर्ट और हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्लियर नहीं होगी तो आपके लिए मार्केट के अंदर अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो आई विल शो यू, दिस वाज आवर ट्रेडिंग सेटअप फॉर द डे. सुबह 11 बजे के आसपास मैंने ट्रेड सेटअप शेयर किया था, मॉर्निंग 11 o'clock, एंड आई वाज प्रीटी श्योर दैट इफ दिस लेवल कम्स वी विल एंटर एंड आवर टारगेट वुड बी जस्ट आवर मिडिल रेंज ऑफ CPR, that is this level. We almost hit the target. It was just down, like we captured 100 or 110 worth of spot points on bank nifty index. So अब लॉजिक समझिएगा कि मैंने क्यों इसको एंट्री रखा और क्यों हमने कहाँ पे टारगेट रखा. ये सबके पीछे लॉजिक क्या है. देखिए, एंट्री का लॉजिक बहुत सिंपल था. हमारा जो डे का हाई है उसका ब्रेक होना जरूरी था, दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट अराउंड 35,300 लेवल्स. अगर ये भी ब्रेकआउट हो जाता है तो हमारी एंट्री तो क्लियर हो गई. अब हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा था, ये हमारा स्टॉप लॉस था, पर हमारा टारगेट काफी बड़ा था. ठीक है, तो 50 पॉइंट के अगेंस्ट हमारा अगर 122 पॉइंट्स का टारगेट है, सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1:2 worth of risk to reward ratio, and that was pretty good risk to reward ratio, and we were able to capture this whole momentum. So most of the TMT club members actually were able to book profits in the बैंक निफ्टी इंडेक्स. इट वाज दैट सिंपल. सो नाउ लेट मी टेल यू कि कल क्या होने के चांसेस हैं. ओके, कल की एनालिसिस कैसी रहेगी ये मैं आपको बता देता हूं. इट्स प्रीटी सिंपल एक्चुअली. लेट्स जस्ट लुक एट हाउ डिड द इंडेक्स बिहेव टुडे. ठीक है, मैं आपको लेवल्स की बात करता हूं ना. लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट है. एक बार जब गैप डाउन हो गया उसके बाद क्या हुआ है, इंडेक्स सिर्फ एक जोन के अंदर ट्रेड करता रहा तकरीबन 2-2:30 बजे तक. तो ये लेवल कौन से थे, ये जोन कौन सा था, मान लीजिए. चलिए मैं यहां से चार्ट पे से पूरे लेवल्स हटा देता हूं. ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं लेवल्स को हटा देता हूं. आई विल हाइड दोस लेवल्स. ओके, नाउ यू टेल मी हाउ कैन यू एक्चुअली आइडेंटिफाई कि इंडेक्स कहां जाएगा. फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको नहीं पता है क्या होने वाला है. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मार्केट अभी यहीं तक गया है. ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मार्केट यहीं तक गया है. अब यू डोंट नो आगे क्या होगा, बट हाउ कैन यू नो. इट्स प्रीटी सिंपल. इफ यू नो द लेवल्स यू कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट the movement of the price. So when you will see that how is the index behaving, it is actually behaving in a very consolidating way between the two levels. और finally जब breakout हुआ तो हमारा definitely इस breakout पे हमारा ट्रिगर भी हुआ और टारगेट भी अचीव हुआ. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल लेवल्स एंड सपोर्ट्स. कल के लिए हम बात कर लेते हैं. देखिए कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे इसको समझ लेते हैं. एक क्रूशियल सपोर्ट जोन की अगर मैं बात करूं, मेजर सपोर्ट जोन की बात करूं बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर, तो मेजर सपोर्ट जो है वो आपको मिलेगा 35,098 के लेवल पे, जहां से आज अच्छा खासा सपोर्ट इंडेक्स को मिला है. सो दिस इज गोइंग टू बी योर मेजर सपोर्ट. ओके, नेक्स्ट गुड सपोर्ट विल कम अराउंड एट 35,200 लेवल. यहां पे आपको एक नेक्स्ट अच्छा सपोर्ट मिलेगा. तो ये दो लेवल्स आप बैंक निफ्टी में मार्क कर लीजिए. इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं. देखिए रेजिस्टेंस अगर देखेंगे अपसाइड पे तो आपको सबसे पहला रेजिस्टेंस तो यहीं पे मिल जाएगा 35,445. ओके, दिस इज रेजिस्टेंस 1 एंड दिस इज योर सेकंड रेजिस्टेंस 35,579. दिस इज रेजिस्टेंस 2 एंड दिस वन इज योर लास्ट एंड थर्ड रेजिस्टेंस दैट इज 35,800. ओके, ये आपके तीन रेजिस्टेंसेस हैं. कल क्या करना है आपको, ट्रेड किस तरीके से लेना है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. मान लीजिए इसको पहले तो हम एक काम करते हैं, आर्ली चार्ट पे लगा लेते हैं. ओके, सो दैट लुक्स मच बेटर नाउ. ओके, लेट्स शिफ्ट टू 15 मिनट चार्ट्स. या फाइन. सो कल आपको क्या करना है, कल आपको ये देखना है कि मार्केट ओपन कैसा हो रहा है. मान लीजिए अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, मान लीजिए 100, 125, 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग होती है, 35,500 के ऊपर मार्केट अगर खुलता है, आपको ये CPR के ऊपर यानी प्रीवियस डे CPR के मार्केट ऊपर अगर खुलता हुआ दिखता है, तो आपको इनिशियली तो एक लिटिल you'll face a little profit booking pressure. वो प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर आपको आता हुआ दिखेगा और इंडेक्स यहां कहीं तक आएगा 35,524 के लेवल के आसपास तक और वहां से रिट्रेसमेंट आ सकता है. दैट इज सिनेरियो नंबर 1. ठीक है, कल भी मैंने आपको यही सिनेरियो बोला था. अगर मान लीजिए इंडेक्स गैप डाउन खुलता है और नीचे जाता है तो यहां पे सपोर्ट लेके 35,098 के लेवल पे सपोर्ट लेके वहां से ऊपर जा सकता है या फिर कंसोलिडेट करके ऊपर जा सकता है. और एग्जैक्टली वही हुआ.
चाहे तो कल का वीडियो जाके देख लीजिए। ओके, सो दिस इज वन सिनेरियो, गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग लेके और फिर वापस ऊपर जा सकता है, दैट इज वन पॉसिबल सिनेरियो। इन केस गैप डाउन खुलता है तो अगेन 35,098 के लेवल के आसपास सपोर्ट लेके थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद वापस ऊपर जाता हुआ आपको दिख सकता है। इट्स अ डे ऑफ एक्सपायरी एंड वील ट्राई टू मेक श्योर दैट वी बुक गुड प्रॉफिट्स ऑन टुमारोज एक्सपायरी। होपफुली कल एक आपको नैरो सीपीआर रेंज मिलेगी बिकॉज द इंडेक्स इज consolidated इन अ वेरी स्मॉल रेंज। तो कल आपको एक नैरो सीपीआर रेंज मिलेगी और नैरो सीपीआर रेंज का मतलब है कि आपको ट्रेंडिंग डे मिल सकता है। ऑल यू हैव टू डू इज कैप्चर दैट ट्रेंड एंड व्हेन वील कैप्चर दैट ट्रेंड इट विल बी अमेजिंग। ओके, सो दैट इज वन थिंग फॉर श्योर। नाउ let's discuss about the Nifty 50 index because Bank Nifty has already been done. So let's discuss about the Nifty 50 index. Okay, here it is. Yeah, so let's switch it to 5-minute time frame. अगर आज के दिन में हम देखेंगे निफ्टी के अंदर क्या हुआ तो आपको एक चीज क्लियरली दिखेगी कि बहुत ज्यादा कोई बड़ा अच्छा मूवमेंट नहीं था। 15,490 से लेके 15,524 की एक स्मॉल सी रेंज है, इसके अंदर पूरे दिन कंसोलिडेट किया निफ्टी ने एंड बाय द एंड ऑफ द डे विद द हेल्प ऑफ रिलायंस एंड प्राइवेट बैंक्स इट मैनेज टू मूव बैक अप। कहां तक गया ये भी समझ लीजिए आप। देखिए, अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो आपको सीपीआर की इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। यहां पे आपको सेंट्रल प्राइवेट रेंज दिख रही है ऊपर, यहां पे आपको दिख रही है, ये है सीपीआर। क्या हुआ, सीपीआर से फाइनली इंडेक्स ने लास्ट में रिजेक्शन लिया। सो कहने का मतलब क्या है, अगर ये लेवल ब्रेकआउट हुआ था तो इस ब्रेकआउट के साथ आपका टारगेट सिर्फ सीपीआर तक का ही बनता था। ठीक है, ये आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। सो इफ यू हैव योर लॉजिकल एंट्री, इफ यू हैव योर लॉजिकल टारगेट्स, इट बिकम्स मच इजियर टू टेक गुड प्रॉफिट्स फ्रॉम द मार्केट्स। वन थिंग, ओके, कल के लिए लेवल्स की बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट लेवल जो कल के लिए रहेगा सपोर्ट का वो ये है आपका लेवल 15,490। वी आर टॉकिंग अबाउट निफ्टी, सो 15,490 इज योर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ गुड सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट 2 15,524, दीज टू लेवल्स आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल। इन केस और नीचे आता है इंडेक्स तो आपको ज्यादा से ज्यादा 15,456 का जो लेवल है, 15,456 का जो लेवल है, यहां तक आपको इंडेक्स जो है आता हुआ दिख सकता है। सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। अब हम रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। कल रेजिस्टेंस किधर पे फेस करना पड़ेगा इंडेक्स को, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 ही लेवल हैं ऊपर रेजिस्टेंस के, उसके बाद वापस ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएगा निफ्टी। दिस इज रेजिस्टेंस 1, हो सकता है गैप अप के साथ ही ये चला जाए, और दिस इज रेजिस्टेंस 2। ठीक है, ये हमारे इंडेक्स के लिए हाईएस्ट हाई है अभी तक। अगर ये 2 लेवल कल ब्रेक होते हैं, लेट्स से कि कल आपको इंडेक्स फ्लैट ओपनिंग दिखती है या माइल्ड गैप अप ओपनिंग दिखती है, तो गैप अप ओपनिंग के बाद क्या है, वेट करना है प्राइस एक्शन का। नीचे आता है अगर इंडेक्स और यहां से रिवर्सल लेता है और अपने डे के हाई को तोड़ता है तो आप बुलिश हो सकते हैं एटलीस्ट टिल 15,656। और जस्ट इन केस यहां पे हॉल्ट करके इंडेक्स यहां पे कंसोलिडेट करता है एंड बायर प्रेशर डेवलप होता है, तो यू कैन सी अनदर मूव अपवर्ड्स इन द इंडेक्स। दिस इज वन हाई पॉसिबिलिटी for tomorrow's trading session, so you keep that in mind, this is possible. If this happens, we'll discuss this in tomorrow's trading session कि ऐसा हो गया। okay, and नीचे की तरफ तो अगर आपको इंडेक्स जाता हुआ दिखता है तो देयर आर हाई चांसेस दैट इंडेक्स विल फाइंड सपोर्ट एट 15,450 15,500 जोन, और यहां पे आपको फिर कंसोलिडेशन होता हुआ दिख सकता है। दैट इज वन पॉसिबिलिटी फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन फॉर द निफ्टी 50 इंडेक्स। हमने निफ्टी की भी बात कर ली है, हमने बैंक निफ्टी की भी बात कर ली, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड सेटअप बनाना है। ओके, सो जस्ट इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट द स्टॉक मार्केट्स, जस्ट इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न इंट्राडे ट्रेडिंग, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। अभी से फुल टाइम ट्रेडर बनना इतना आसान नहीं है। इवन आई एम नॉट परफेक्टली अ फुल टाइम ट्रेडर, आई हैव मल्टीपल अदर बिजनेसेस दैट आई डू अलॉन्ग विद ट्रेडिंग, बट ट्रेडिंग इज माय पैशन, आई डू इट विद फुल पैशन, एंड इट टुक मी several years to reach this particular level where I am trying to be in profits for most of the days in the month. My target is not to make 1 lakh rupees a month. My target is pretty small because my target is realistic. Okay, now I might make 1 lakh 2 lakh rupees a month as per my trading capital, but I have a fixed target of generating handsome 5 to 6% returns on monthly basis, whatever my trading capital is. I have a handsome target of 5 to 6% generating 5 to 6% profits on monthly basis. So that is pretty good profit if you'll say 5 से 6% अगर आप मंथली बेसिस पे बना पा रहे हैं तो आप ईयरली बेसिस पे यू विल मेकिंग मोर देन लाइक 50% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड tell me a business that gives such kind of return on investment. So this is possible.
but only with right kind of discipline and patience, and obviously the right kind of learning. So if you are interested to join me on the Millionaire Trader course and the Millionaire Trader Club, I would be more than willing to help you out with the learning process. A link description में है, आप एक बार check कर सकते हैं कोर्स के पूरे ब्रोशर को. It would be really helpful for you, and you can check all the day's content. There are 8 live sessions with me, and the course, you can attend the course multiple times for a period of 3 months, and that is going to be amazing. Okay, so enough of the course promotion. Let's just say that tomorrow you have to trade cautiously because it's an expiry day, and keep a watch on Reliance. Reliance can give good moves tomorrow again, and also keep a watch on life insurance companies. All the life insurance companies are expected to give good moves again because they are breaking the bearish trend as of now. If you can see see most of the life insurance companies on the charts, they are trying to break the bearish trend, and there can be huge up move tomorrow from those companies. So these are a few things that you need to take care for tomorrow's trading session. I'll share the TMT watch list for stocks with all the TMT members tomorrow morning or by tonight. So enjoy the rest of the day and have a happy evening. Stay safe, get yourself vaccinated, wear your mask, and take care of your family. So this is Utkarsh Bhargav. Thank you for listening to me. Don't forget to subscribe to Roaring Bulls, and hope to see you tomorrow.